Ji, Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to the episode 4 of Stumps and Inside the Ultimate Cricket Discourse. Tonight, I have with me Mustafa Ayub, who is currently becoming a dentist and is a fellow cricket enthusiast. And he, along with me, is extremely gutted and sad at what transpired between Pakistan and Afghanistan during the World Cup today. How are you doing, Mustafa? Assalamualaikum Arham, I'm Assalamualaikum doing Arham, I'm good. doing good. Actually, not so Actually, much not so much after the after recent the few recent hours, few last few hours, hours. last few hours. Obviously and Obviously and honestly, a honestly, result a that result that no one was no one was expecting. Honestly, कभी expecting. सोचा नहीं Honestly, था कभी कि ये भी सोचा दिन नहीं था कि आएगा ये भी कि दिन आएगा कि the team we the team trained, the we team trained, our the team players our built, players built, actually came up actually and came up defeated and us in a defeated World us in Cup a match. World Cup match. So yeah. Yeah, I So yeah. think it was very traumatizing for all the Pakistanis. This was, in case you missed it, this was Afghanistan's first ever ODI victory against Pakistan, and in the process of which they also created the record for their personal highest run chase that they have ever done during a World Cup match, which is indeed a significant victory for them. And while we are at it, this is not Afghanistan's first ever victory in a World Cup match. This is, in fact, their fourth victory, and in this particular edition, they have won two matches now. They have recently defeated England as well, who were the world champions, and I think Afghanistan is no longer a team that should be taken lightly. What do you think, Mustafa? Yeah, that is true, Yeah, that but is true. But see, comparing comparing us to England, us to specifically in England, this World specifically in Cup, this World Cup, so that's like so that's like comparing very comparing two very low two benchmarks low that are being benchmarks set that are being because now set हम because अच्छा now करे हम ना अच्छा England करें कर ना रहा है. England कर रहा है. England, even though they are England, even world though they are champions right world now, I think champions right they're now, I think last they're on the points last on table. the points table. So indeed, So matlab, indeed, Afghanistan मतलब is a Afghanistan solid is a team. solid But team. again, I But feel again, that I this feel was a that match this we should was a have match won. we should have won. And as far as And England as goes, far as their England goes, performances their generally performances have been generally have disappointing, been even though they disappointing, are even world though they are champions. world So champions. just because Just Afghanistan because won Afghanistan against won them, against them, I I I don't understand I don't how understand how today happened. today Honestly, this happened. should not Honestly, have this should happened. not have happened. Yeah, I agree. I think there are absolutely no excuses for what happened today. Afghanistan is, no matter how talented they get, they are still beneath us and many other teams. They are not considered as, uh, uh, since they have recently gained the test status, they are not considered as Yeah. the top eight teams of the world. Going back to the review of the match, basically Pakistan lost today by 8 wickets after scoring 283 runs on the board. Pakistan won the toss and batted first. मेरे opinion में I think it was a good toss to win. Both the captains wanted to bat first, ठीक है. और I think all in all it was a good total चेन्नई की पिच देखते हुए, and I was researching some stats जिसमें I found out कि uh, amongst all the ODIs played in Chennai in the 21st century, the average run rate for teams playing over in ODIs over there is around 5.2, and that is a rough estimate from around 20 ODIs. So that goes to show कि even though मतलब 20 years में pitches हाँ. काफी change होती हैं, बट जो हमारा स्कोर था कंसिडरिंग के पिच स्लो थी एंड इट डिड हैव सम टर्न इन इट, तो हमारा स्कोर वाज अ गुड total on this particular surface and the batters did a good job. But Yeah. then again, I think second innings में जो हुआ, that is another debate. What do you think about our batting firstly? यार यार बैटिंग बैटिंग ऑनेस्टली honestly स्टार्टिंग में it was a starting bit में it slow. was a bit slow. Abdullah Shafiq Abdullah and Shafiq Imam, they and did look Imam, they did promising, look but as promising, but usual as हमारी usual opening हमारी partnership opening isn't partnership isn't hasn't been able to hasn't been materialize able to in that materialize sort. in that sort. उसके बाद उसके बाद Rizwan got out रिजवान got unlucky, out and unlucky generally and it was generally going fine, but it हमारा was run going rate fine but slow हमारा चल रन रहा रेट था स्लो चल रहा इस था pitch के हिसाब से इस भी. पिच के हिसाब So से भी. I really So think कि I really think कि again Babar played a really again good Babar knock. played a really good knock. But if you But calculate if his you calculate his his strike rate his overall, strike so rate it was overall, still a so bit it slow. was still a bit slow.
But overall, if you consider कि इसका साथ में जो आके आखिरी 10 ओवर में किया है, and generally what the score turned out, I think it was a fine total for those circumstances and that pitch. But ये भी consider करना होगा, like as the commentators were saying, कि the pitch did or the conditions did change सुबह और रात के दरमियान. तो सुबह it was kind of unfavorable. उस हिसाब से I think our batting did decent. It could have been better. But then again तुमने जो कहा है कि जो normal par run rate है इस pitch पे 5.2, उसके हिसाब से भी like 282 was a good score. Yeah, I think it was a very good score and बाबर की भी बात अब तुमने की है. I मतलब जब मैं मैच देख रहा था I was fuming. ट्विटर भी साथ साथ ज़ाहिर है चल रहा होता है, तो कुछ लोगों की बातों पे ना मतलब मेरी हमारी फैन बेस है. आई थिंक तुम्हें तो पहले से पता है, मेरी फैन बेस से ना काफ़ी ज़्यादा कंटेंशंस हैं. और जब Yeah. मैं मैच देख रहा था तो मतलब बाबर बाबर की बैटिंग से तो आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड. अब जब मैं मैच देख रहा था तो मतलब मुझे पता था कि ये जो डिसीजंस ले रहा है, आई कुड इजीली रिलेट कि वो किस रैशनल से ले रहा था. बट आई एट द सेम टाइम आई न्यू कि जो हमारी फैन बेस है वो उसको क्यों क्रिटिक करेगी. अब हम लाइक उस पर आ ही गए हैं. आई थिंक बॉलिंग में हमारा जो लैक कर रही है ना इस वक्त चीज, आई थिंक सबसे बड़ा हमने आई थिंक फ्लॉज हर एक से होते हैं, ठीक है मुस्तफा, लेट्स एग्री ऑन दैट कि Yeah. मतलब सारे इंसान होते हैं एट द एंड ऑफ द डे एंड एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स. एंड one of the mistakes that I think we are consistently making is bowling Haris Rauf in the power play. Australia वाले मैच में I think Haris Rauf did bowl in the power play and he got smacked all over I think for around 24 runs, और आज भी I think उससे 15 plus runs पड़े हैं. तो वहां से I think दोनों मैचेस में ना ऑपोजिशन टीम ने वहां से अपनी टोन सेट की है. और Also हारिस का momentum बाबर बहुत ज्यादा lose आजम हो जाता है या इस तो चीज से कि हारिस जब पावर प्ले बोल करता है. Yeah. हाँ. तो coming to Babar Azam, I think he is being consistently unduly criticized because of how he has captained in the past. पहले जो उसने कैप्टनसी की है कुछ मैचेस में, ठीक है मतलब इंसान है, गलती होती है, ठीक है, everybody makes mistakes. But I think we are as a fan base we are consistently targeting him during a World Cup. That doesn't make any sense, ठीक है. He is the best player that you have got and he has come through the system. Let's make it very clear that उसकी कोई सिफारिश नहीं थी and वो किसी मतलब किसी दो नंबर तरीके से नहीं आया. He is the perhaps the best ever player that you have got, best ever batsman that you have ever got, ठीक है. और इसकी जो credentials हैं he has completely come on merit, ठीक है. तो the decisions that he makes, you shouldn't be criticizing them during the World Cup. Now coming to the decisions that people are currently criticizing him for, जो मेन कंटेंशन आ रहा है ना लोगों का कि ये कैप्टनसी सही नहीं कर रहा, वो ये कंटेंशन आ रहा है कि व्हाई weren't हारिस रऊफ, हसन अली एंड शाहीन अफरीदी यूटिलाइज्ड अर्लियर जब मिडल ओवर्स में, कि why weren't their overs completely utilized and why were they bowling Shadab and Osama during the 50th over. Now my point of contention with that is कि आप एज अ कैप्टन यू हैव टू थिंक थ्रू ऑल द सिचुएशंस, ठीक है. यू हैव टू सी कि अगर गेम 50th ओवर तक जाएगी तो हु विल बॉल दैट 50th ओवर. वी कुड दो चीजें होती हैं, ठीक है. वी कुड हैव मेड इट द सेम मिस्टेक अगेन जब इंडिया वाले मैच में नवाज एंडेड अप बॉलिंग द लास्ट ओवर, ठीक है. उस वक्त उसने बाबर डिड टेक द अदर रूट ऑफ यूजिंग द स्ट्राइक बॉलर्स अर्लियर, बट देन इट डिडंट पे ऑफ for us that well. So in my opinion, he was doing the right thing by bringing Osama Mir and Shadab Khan during the around the 40 over mark. और जो उसने दूसरी चीज भी करने की कोशिश की थी, that is very important to keep in mind. He gave Haris Rauf one over, but उसमें Haris Rauf couldn't break through, and then he brought back Osama Mir again to finish off his spell. अब अगली बात जो आती है जिस पे लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं कि जब कोटा यूज हो गया था and I think 5 overs were remaining and we had 5 overs of pacers as well. तो 46th over जो था, Babar Azam gave that over to Sama Mir that went for 11 runs. Now I personally think that that was a risky decision but also a very good decision at that particular time, ठीक है. Why was it a good decision? It was a good decision because Osama Mir had
conceded only 3 to 4 runs in his previous over. Okay? And the Afghanistan batsmen seemed pretty comfortable with the bat against the Pacers. Okay? At that particular instance. तो बाबर के point of view से अगर देखा जाए तो giving Osama Mir the 46th over was a good decision क्योंकि the Afghan batsmen might have gotten greedy and they might have tried to hit him for sixes and in case मतलब probability ज्यादा थी ना कि वो मिस क्यों करते और कैच हो जाता तो दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन वो मेरा इस पॉइंट को सबसे इतना डिटेल में बताने का मकसद ये है कि व्हेन यू क्रिटिसाइज बाबर आजम for his mistakes during his captaincy then you should be appreciating the risky decision and the proactiveness that he has shown in the captaincy today. What do you have to say about all of this? यार यस सो अगेन अभी मैं ट्विटर ही देख रहा था तो लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग ऑन दिस वेरी पॉइंट और मेरा खुद भी यही क्वेश्चन था सिंस यू आर द क्रिकेट एक्सपर्ट हियर बिटवीन द टू ऑफ अस Osama Mir wala 46 over that has been controversial but I think you have framed it pretty well कि again Babar Azam in the last match in the match against India he did take the other route that did not work out और फिर यही आता कि यार आखिरी ओवर स्पिनर को क्यों दे दिया and like this always happens because no matter uh, who is bowling um, जब आप हारते हैं तो टीम रगड़ी जाती है so he did take a risk and he did take the other route that didn't work out but generally I think I'm not satisfied with the quality of bowling shown in this World Cup honestly Shaheen was good in the last match he took a 5 wicket that was pretty nice like, don't you think that there's something going wrong with the bowling department? It's not clicking. I'm not sure what is. So I feel like in general, we need another proper spinner or needed another proper spinner for this World Cup because again India की 20 cricket में पता है कितना turn होती है how many wickets spinners are taking here from other teams we don't see that happening with ours उसके अलावा I don't know what's wrong with our fast bowling department I mean Shaheen के 5 के अलावा and like Haris की शुरू में I think पहले 2 matches में से performance थी उसके अलावा it just couldn't work out for us today and I mean ये जो Yeah. criticism हो रही है बाबर की like on Twitter and media that's uncalled for but don't you think for the team as a whole there's something seriously going wrong with us I think you're very right in pointing out that our bowling is not doing well at all in this World Cup. अब eventually I think हम जितनी मर्जी बातें कर लें किसी बैट्समैन को अगर कर लें या फास्ट बॉलर्स को eventually जो सारी डायरेक्ट जो ओनस फॉल कर रहा है ना वो कर रहा है स्पिनर्स पे अब what you yeah mentioned was कि we should have had another spinner but उसमें थोड़ा सा ये टेक्निकलिटी आ जाती है कि टीम बैलेंस जो है ना वो हमारा सही है मसला यहाँ पे आ रहा है मुस्तफ़ा के जो हमारे स्पिनर्स हैं दे आरंट फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैड ऑन देम अब इंडिया में जब वर्ल्ड कप होता है ना तो इवन दो आवर फास्ट बॉलर्स आर रियली ग्रेट बट उनके ऊपर से थोड़ा सा लाइमलाइट या रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम इन द सेंस इस सेंस में हो जाती है कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होते हैं तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पिनर्स पर ज़्यादा आती है टू कंट्रोल और आज भी जो प्रेशर हम एग्जर्ट नहीं कर सके और जिस तरीके से हमने मिडिल ओवर्स में उनको जाने दिए बात गैप जो जो एक बहुत बड़ा वॉइड आ रहा है ना वो यही आ रहा है कि हमारे स्पिनर्स आर नॉट बॉलिंग अप टू द मार्क एंड दे weren't able to get us the breakthroughs when needed हमें बार बार फास्ट बॉलर्स के पास जाना पड़ रहा है which is getting problematic and मतलब आप जितनी बातें कर लो इवेंचुअली आपका जो इशू आ रहा है वो एक वही शादाब नवाज और उसामा मीर वाली जगह पे आ रहा है और उसमें मतलब काफ़ी चीज़ें हैं कि अबरार को खिलाना चाहिए था वो नहीं खिलाना चाहिए था वो अलग बात है yeah और उसका डिसीजन भी जनवरी में लिया गया था when शाहिद अफरीदी became temporarily became a chief selector तो आपने जो डिसीजन पहले लिया था आप उसको बैक कर रहे हैं यू कैन नॉट हैव अबरार एंड उसामा मीर इन द सेम 15 ठीक है दैट इज अ वेरी डिफरेंट या मतलब डिफिकल्ट थिंग टू हैव कंसिडरिंग द टीम बैलेंस तो उसामा मीर को आपने लिए अब बाबर भी देखो ना एक हद तक क्या ही करे he has to make do with the resources that he has got he cannot bowl for the bowlers he cannot field for all the fielders he cannot bat for all the players at the end of the day Babar is just playing two roles there are 10 other role players in the team and each of them has to perform their role because at the end of the day it's a team game yaar honestly बहुत आज दुख हुआ है
This should not have This should happened. not have happened. खैर आई एग्री यार मतलब इट्स वेरी जैसे कहते हैं ना ट्रॉमेटाइजिंग कैसे ट्रॉमेटाइजिंग तो नहीं मतलब आई थिंक इट्स सैड टू सी पाकिस्तान लूजिंग 3 consecutive मैचेस इस तरह बट लुकिंग फॉरवर्ड व्हाट डू यू थिंक मतलब आई थिंक पाकिस्तान अभी ऑब्वियसली नॉकआउट तो नहीं हुआ बट डू यू थिंक पाकिस्तान कैन still qualify and reach the semi-finals? Yeah, देखो, being a Yeah, देखो, Pakistani, being a I would Pakistani, I would obviously want obviously Pakistan want to qualify, Pakistan and to अब वही qualify, and शुरू अब हो वही जाएगा कि शुरू हो जाएगा कि calculations, counting the calculations, net run counting the rate, net ये run इससे rate, जीत जाए, ये वो इससे से जीत जीत जाए, जाए, वो से तो वो जीत जाए, तो हर वो साल में हमारे हर साथ साल होता में है. हमारे But साथ होता है. honestly, But honestly, despite the despite urge the that I have urge कि that I Pakistan have जाए कि semis Pakistan में, जाए semis I'm में, not sure I'm anymore not if we sure deserve it, anymore if we honestly. deserve it, honestly. Because again, Because हमें again, बहुत हमें reminders बहुत मिल चुके हैं इस reminders वर्ल्ड मिल कप चुके हैं में. इस वर्ल्ड कप में. अब अब 3 हो गए हैं. 3 हो गए हैं. और आज का और सबसे बड़ा आज है का कि सबसे if, बड़ा है if कि despite this अगर हम डिस्पाइट दिस semis में अगर हम जाते हैं सेमीज में जाते हैं तो it's still तो gonna be the इट्स स्टिल same गोना कि बी ओ द देखो सेम कि पहुंच ओ तो देखो गए, there's पहुंच तो going गए, to be देयर no गोइंग टू corrective बी नो work. करेक्टिव वर्क. Because यार देखो बिकॉज यार हमारे देखो पिछले मैचेस हमारे पिछले अफगानिस्तान से मैचेस जो हुए हैं अफगानिस्तान से जो like in the हुए last हैं one लाइक two इन द years, लास्ट right, 1-2 years, राइट, वो कितने वो क्लोज मैचेस कितने हुए हैं. क्लोज मैचेस हुए और हैं. उनमें से भी और उनमें किसी से भी मैच में ये किसी हो मैच सकता में था जो ये हो आज हुआ सकता है. था जो आज And हुआ है. those should एंड have दो been शुड हैव बीन wake up calls या वेकअप reminders कॉल्स या for us. रिमाइंडर्स फॉर अस. लेकिन हमने लेकिन कुछ हमने ऐसा कुछ सीखा नहीं ऐसा उनसे, सीखा एंड नहीं आज उनसे, हम एंड इसलिए आज इधर हम हैं. इसलिए इधर हैं. तो तो despite the डिस्पाइट chance द Pakistan चांस still has पाकिस्तान semis स्टिल में हैज जाने का, सेमीज में जाने I'm का, I'm in the आई एम ethical इन द dilemma एथिकल कि डायलेमा do we कि even डू deserve वी it or इवन not. डिजर्व इट और नॉट. हमारे लिए in the हमारे long लिए run इन द क्या लॉन्ग रन बेहतर है. क्या बेहतर है. यार आई थिंक यू हैव मेड 2 good points. ठीक है एक तो ये कि तुमने अफगानिस्तान की पिछले मैचेस की बात की थी. यहाँ पे आई थिंक while we as Pakistanis are very sad and you could say depressed is a strong word but I think we are just sad about today's outcome but I think Afghanistan की appreciation भी बनती है. Jonathan Trott their coach said कि it's not an upset. Afghanistan basically played really well. तो while we are criticizing our own players, I think अफगानिस्तान की भी appreciation बनती है कि वो कितना जैसे कहते हैं ना उनका अब राइज देखो कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं. और उनका जो टैलेंट है दे आर रियली नर्चरिंग वेल. मुझे अभी भी याद तुमने उसका पता है तुम्हें जो हमारे एक सर होते हैं इकोनॉमिक्स की फील्ड के बड़े एक सर थे सर अहमद जावेद. यू माइट हैव हर्ड ऑफ हिम. पढ़ा तो नहीं होगा तुमने. हम्म, ये सर ये जीशान के सर भाई तो जीशान नहीं के है? भाई तो नहीं है. I don't know, but I think हाँ Sir हाँ, Ahmed या Javed, या he is या ये quite ब्रिज में आते known थे. ये ब्रिज में आते थे. हाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना माइक्रो या नहीं या बल्कि इकोनॉमिक्स एज ए जनरल ए लेवल्स में. तो मैंने अब ए लेवल्स में जल्दी में शुगर मैंने 6 सब्जेक्ट्स रख लिए थे और मैंने मतलब 1 महीना पढ़ी हुई है मैंने इकोनॉमिक्स ए लेवल्स की. तो अब ट्रायल क्लास हो रही है. अब उन्हें भी शायद क्रिकेट का शौक था. मैं ऑब्वियसली जब क्रिकेट का शौक हो मेरे दुकान खड़े हो जाते हैं. तो हुआ क्या कि दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2018. ठीक है. And या he goes like he was talking about the teams and all कि अफगानिस्तान ये वो मतलब अफगानिस्तान को उस वक्त राइज थोड़ा सा आ रहा था. तो एक मतलब पता नहीं क्या चीज हुई उसमें सर ने मुझे ऐसे देखा कि इसने बोला क्या. आई थिंक आई वेगली रिमेम्बर. आई थिंक आई सेड कि 2023 का या 2027 का वर्ल्ड कप जो है ना वो अफगानिस्तान जीतेगा. आई डोंट नो मैं पता नहीं किस फील्ड में था और मैंने ये कह दिया. और सर ने मुझे उसके बाद ना मेरी अच्छी खासी क्लास की कि क्या मतलब अफगानिस्तान जीतेगा ये वो. बट मेरी भी इवन दो आई वाज काफी छोटा उस वक्त बट मेरी जो रैशनल थी ना या लॉजिक थी जो चल रही थी वो ये थी कि जिस तरह श्रीलंका 96 में जीता था. आई सी अफगानिस्तान विनिंग समथिंग इन द मतलब बिफोर 2030. मतलब दैट इज सो Honestly, these शॉर्ट guys Honestly, टाइम. might these win guys the might Champions win the Trophy. Champions Trophy. They might win a They Asia might Cup, win but an I Asia do Cup, have a but I feeling do that have they a will be feeling the that dark they will horse be in the some dark event, horse in and some event, and it is coming. it is हमारे coming. साथ हुआ है, हमारे बाकियों साथ के हुआ है, साथ भी बाकियों होएगा, के साथ इंग्लैंड भी के साथ होएगा, भी हो इंग्लैंड के चुका है. साथ भी हो चुका है. ये जो इरफान पठान जो बहुत आज डांस कर रहा था ना आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया इज गोइंग टू आल्सो टेक अ बीटिंग. और मतलब आई थिंक ऑल इन ऑल अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में देखा जाए तो आई थिंक इट्स अ विन विन. ठीक है अफगानिस्तान की जो रिकवरी हुई है सारी एंड जिस यार तरीके से. एंड अच्छा यार ये कौन सा ये आईसीसी कौन सा इवेंट था, ये आईसीसी लोग इवेंट था, अपनी ये खुद लोग अपनी फाइनेंसिंग खुद करके आए हुए थे फाइनेंसिंग अभी करके आए आफ्टर हुए द थे अभी तालिबान आपके टेक ओवर इन तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान. इन अफगानिस्तान. So हाँ these guys हाँ actually ये make Guys their own actually make their investments. own They investments. They chain with their chain own with their own funds. मतलब they funds. gather मतलब funds. they That's gather funds. that's an incredible That's an thing कि incredible thing कि अब हमारे प्लेयर्स अब को हमारे players हम को कितना पे हम करते हैं, कितना वो पे किन करते हैं, वो किन सर्कमस्टांसेस में निकल के आ रहे circumstances हैं, में उनकी निकल के आ कंट्री रहे में हैं, क्या उनकी हो कंट्री रहा है. में And क्या हो रहा है. coming from हाँ that एंड From that win is जो such a good thing. 2022 का T20 वर्ल्ड कप था या 2021 का आई थिंक जब वो Yeah, अफगान तालिबान का टेक ओवर चल रहा था. 22 अनदर लास्ट पॉइंट ईयर दैट का आई वुड T20 लास्ट था.
Another point that I want to mention over here is that Ibrahim Zadran, who got the Man of the Match award today, he उसने जो बोला said है something very controversial in controversy. his, I think, in his post-match presentation ceremony. I think he said that he is dedicating the award to those that have been sent back to Afghanistan from Pakistan. So that Yeah, was clearly aimed at the government of Pakistan, who have apparently given a deadline of 31st October to deport all illegal immigrants. Now, I हाँ, won't I debate. just saw your tweet. अभी Yeah. उधर ही आ रहा है सामने कि uh, I saw this on TV. यही है सीन कि गवर्नमेंट yeah. ने 31st अक्टूबर तक डेडलाइन दी है यार. Hmm. 40 years हमने इनको we gave them shelter. मतलब it wasn't our responsibility. We accepted them. They were a burden on our economy, our jobs, our resources, हर कोशिश के अलावा they have no legal documents. The security threat they pose हर चीज के बावजूद we trained their cricket team. और फिर अब ये बोल रहे हैं कि we dedicate this to the people who have been sent back from Pakistan. Yeah, I have got a lot of controversial points on this, ठीक है, but recently पता है ट्विटर पे कैंसिल कल्चर बहुत चल रहा था, ठीक है, और मैंने Yeah. एक टर्म यूज होती है अफगानियों के लिए, आई विल जस्ट से कि देयर मतलब दो वर्ड्स यूज होते हैं उनके लिए, आई वोंट गो ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस, और मैंने वो हाँ, कहीं या वो मैंने एक चैट में बोल दिया, और मेरे आई थिंक वो मेरा शायद तीसरा इंस्टेंस या दूसरा इंस्टेंस था जिसमें मैं एक कम्युनिटी में ना मतलब कैंसिल ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि एक तो तुम्हें याद होगा जो मतलब वो आई वोंट टॉक अबाउट दिस ओवर हियर अगेन, बट वो एक बड़ी ना डिफरेंट सी चीज होती है, तो आई डिसाइडेड टू बी वेरी केयरफुल विद माय वर्ड्स, बट आई नो एग्जैक्टली वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड आई नो दैट आई एग्री विद यू ऑन दिस, ठीक है, बट कमिंग बैक another टू द interesting thing. पॉइंट. हाँ. I just मैं देख रहा हूँ a tweet from Imad Wasim. Broken hearts. Do you see a comeback for him in the near future? Yeah, I personally am a staunch Imad supporter, ठीक है, but for the T20 squad, ठीक है, Yeah. 2024 में जो T20 टीम आ रही है, बल्कि आज आज इमाद की टीम में कमी ना जरा ज्यादा महसूस होगी, because he was the one who played the role with Wahab Riaz in helping Pakistan escape an upset in the 2019 World Cup, but I think we should let bygones be bygones, and all in all, I think there is still hope, and Pakistan fans shouldn't give up. Shouldn't give up. मेरे तो मुझे तो पता है, मैं चुप करके खाना खाया है उस वक्त पाकिस्तान मैच आ रहा था, अब्बू कहते हैं, और वो जो बनवाया नहीं था प्रोमो पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप का, वो जो जो वीडियो थी, आई थिंक तुमने देखी होगी, तो वो Yeah, अब्बू edit कहते तो था. और एफर्ट लगा लो और पैसे खर्च कर लो और जाके तुम ये वीडियोस और प्रोमोस बनवा लो, मैच टीम तो मैच आ गई. मैंने कहा यार अब्बा पहले ही दुख हुए में और आप और दुखी करी जाए. Yeah. है लेट्स होप के पाकिस्तान कम्स बैक वेल, ठीक है, एंड अफगानिस्तान ऑल इन ऑल लेट्स होप के जो टीम्स हैं दे fight with the best of spirit and may the best team win. But as a Pakistani, let's hope and pray that Pakistan still manages to qualify for the semi-finals. That itself, from this point onwards, would be an achievement. ठीक है, पाकिस्तान के अच्छा, और बहुत मसले हैं, Arham, पाकिस्तान के sorry for cutting you off. एडमिनिस्ट्रेशन. The two हाँ. words that you were just talking about, the news होते हैं, they're currently trending on number 2 in Pakistan. सी आई थिंक मतलब मेरी गलती नहीं थी, आई न्यू, क्योंकि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप था, कोई ऑफ अराउंड 25 पीपल, ठीक है, और मैंने वो कहा, और मैंने लिटरली मजाक में कहा था, मतलब वो शायद मेरी गलती थी कि वो उस तरह का मजाक उसके ग्रुप में नहीं करना चाहिए था, डिफरेंट तरह के लोग हैं, वो क्रिकेट रिलेटेड Yeah. ग्रुप है, and everybody was like not a good joke to make, what are you saying, this and that. I was like chill bro, क्या हो गया, easy सीन है. And then I had to apologize to मतलब मामला बंद करने के लिए, because मेरे अंदर और कैपेसिटी नहीं थी लास्ट ईयर की तरह जिस तरह में कैंसिल हुआ था. It's है literally trending. Yeah. लेट्स होप कि पाकिस्तान परफॉर्म्स वेल, एंड ऑल इन ऑल दैट इज एक और जो हमारे इश्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह चेयरमैन चेंज हुए हैं बेग योर पार्डन, और एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी मसले हैं, वो दैट इज डिबेट फॉर अनदर डे. But currently, let's hope that Pakistan manages to stage a comeback for the ages. Currently, हमारे जो टाइगर्स हैं वो कॉर्नर हुए हुए हैं, pun intended at the 1992 reference, ठीक है,
So I'm sincerely hoping for a comeback. Thank you, Mustafa, you for joining me, and don't be No late for worries, your my class pleasure, tomorrow. Arham. Okay? And see you everyone. Go please definitely क्या बोली जा रहा हूँ मैं प्लीज डू ये बाय द वे इसी तरह अपलोड हो रही है मेरे पास कट करने का टाइम नहीं है फिर go like share subscribe and do whatever you can to support this Press video the bell और अगर icon, subscribe to हाँ जो notification, बेल keep आइकॉन है वो notifications दबाए on, like, एंड comment, अगर तो आपने subscribe, ये वीडियो एंड everything. तक देख ली है तो यू मतलब आपके लिए ही था ये ब्लूपर ठीक है आई डोंट नो अगर कोई देखेगा बट अगर तो किसी ने देख ली आई थिंक यू वेट करेंगे कि कोई देखता है एंड तक के नहीं और अगर किसी ने एंड तक देख ली यू हैव टू रीच आउट टू अस एंड वी विल डेफिनेटली गिव यू अ रिवॉर्ड अ स्टम्प्स एंड इनसाइट एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड for reaching till the end of the video and watching this blooper. Matlab, this is matlab, the first person to reach till the end of the video and make fun of this blooper that I am going to add, they will get a reward. They will get a PR package. ठीक है अब डिपेंड करता है किसकी किस्मत में है Thank you everyone and Allah Hafiz. अबे एंड हो जा एंड ही नहीं हुई तूने कहना है वापस मैं ये भी डाल दूंगा अल्लाह हाफिज कह And दे when yeah. कह दे अल्लाह हाफिज Okay, guys, this is Mustafa Ayub and Hamid signing off. ये